Discuss about the solution. Before going into the solution, we must know these two terms, that is solute and solvent. So solute, what is solute? A solute is a substance which dissolved in a liquid to make a solution. What? The substance which dissolved in a liquid to make a solution is called solute. For example, if we take the example of sugar and water solution, then sugar is a solute because we are dissolving sugar into water, and solute is that substance which dissolved in a liquid. So what we are dissolving? Sugar is dissolved in the water. So sugar is a solute. And solvent, the liquid in which solute is dissolved is known as solvent. मतलब वो लिक्विड जिसमें कि हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं वो होगा सॉल्वेंट. सुगर और वाटर के सॉल्यूशन में sugar is a solute and water is a solvent. We are dissolving sugar into water. So now go to the solution. What is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. क्या है ये? होमोजेनियस मिक्सचर है दो और दो से अधिक पदार्थ का. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द शुगर सॉल्यूशन, तो अगर जब हम लोग शरबत पीते हैं तो उसमें सिर्फ चीनी, नॉर्मली चीनी मिला देते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के अनुसार उसमें क्या करते हैं? चीनी भी मिला देते हैं, नींबू भी मिला देते हैं, नमक भी मिला देते हैं. तो सॉल्यूशन क्या है कि उसमें दो और दो से ज्यादा पदार्थ मिक्स हो सकते हैं, मिक्स होंगे, एंड वो होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस मीन्स कि सभी का क्वांटिटी सारे जगह पे सेम होना चाहिए. द क्वांटिटी ऑफ एवरी पार्टिकल शुड बी सेम इन ओवरऑल सॉल्यूशन. कहीं भी उसका ज्यादा कम नहीं होना चाहिए. नाउ सॉल्यूशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो जो भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन. वो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, वो ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्या होता है कि द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर मिक्स्ड so well with water or the solvent that we cannot distinguish one from another. Means what? कि जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि हम लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन से सॉल्यूट का पार्टिकल है एंड कौन सा सॉल्वेंट का पार्टिकल है. सो दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. And the true solution is also known as a molecular solution. Why it is known as molecular solution? Because the size of solute particle in solvent is the same as that of the molecules. So solution में क्या आ गया कि only soluble substances will make the true solution. क्या? Only soluble substances will make the true solution. Because अगर substance ही soluble नहीं है तो वो वाटर के साथ मिक्स कैसे करेगा? और अगर थोड़ा बहुत मिक्स भी कर गया तो हो सकता है कि उसका कुछ पार्टिकल ऊपर नीचे बैठ जाए. तो दैट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन इज in which we cannot distinguish solute particle and the solvent particle. So only soluble substances will form the true solution. Now look at the properties of solution. A solution is a homogeneous mixture. First property is a solution is a homogeneous mixture. Means what? कि उसका सारे का क्वांटिटी सारे जगह पे सेम होंगे, ना कहीं ऊपर नीचे ज्यादा कम नहीं होंगे.
The size of solute particle in the solution is extremely small, that is less than 1 nanometer in diameter. मतलब 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. Remember this thing. It will be useful when you will solve the numericals. So 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. The diameter of solute particle is less than 1 nanometer in diameter. The particle of solution can't be seen even with the microscope. Can't be separated by filtration. ये फिल्टरेशन से क्यों नहीं सेपरेट होगा? क्योंकि फिल्टरेशन इज अ वेरी कॉमन process in which we will separate out the two things. Mainly filtration can be done in the solution in which one substance gets settled down into the bottom of the other substances. Then the filtration process is very easy, and we can use very easily filtration process. But in this solution, true solution, the particle of solute is so small that we can't even distinguish with the microscope. So how it is possible to filter by the process of filtration? It is impossible to filter the solute particle by the process of filtration. The solution are very stable. True solution does not scatter light. Why it doesn't scatter light? Because the particle diameter is even less than the 1 nanometer, so it can't reflect back the light. So it easily passes the beam of light. Now the types of solution. First, solution of solid in solid, मतलब solid का solid के साथ mixture. Common example is alloy. Alloy क्या है? Mixture of metals. Solution of solid in liquid. Solid का solution liquid में. Example, हम लोग डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेंगे. शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन. Solution of liquid in liquid. Example, vinegar. Vinegar is a solution of acetic acid. Okay. Solution of gas in liquid. Gas का solution liquid के साथ. Means gas is dissolved in a liquid. Example, soda water. Soda water is a solution of carbon dioxide gas in water. Solution of gas in gas, that is air. In air there are so many gases, that is oxygen, carbon, nitrogen, argon, helium. Everything is present in the air. So in the next video we will learn about the suspension. Thank you.